Assalamu alaikum students, hope all of you are fine. And now on your request I'm going to record lecture on chapter number 3, input and output handling. In this chapter we will study about input and output functions, um, statement terminators, format specifier, escape sequence, arithmetic operators. And now in this lecture we will study about output functions. That is, common output function in C language is printf. Clear? Next we will study about input functions, and in C language we are using function scanf for the input. Input function is used to get input values from the keyboard for the during the execution of the program. Clear? After that we will study about statement terminators and format specifier. Then our last topic will be escape sequence. Now students, kindly review chapter number 2, which is programming in C. You must know the basic things about programming, that is syntax, semantics, what are languages, characteristics of high level languages, compiler, interpreter, about editor, compiler, linker, loader, debugger, header files, reserve words. You must know about that, right? So there are two types of languages, low level and high level languages. High level languages are C, Java, Pascal, Visual Basic. Clear? And for high level languages, compiler and interpreter are used to translate language from high level to low level language. The program written in high level language is known as source program, and compiler converted in object program, which is in machine language 01 code, which is understood by the computer. And you must know about the text editor, which is the environment in which you can write program, which is definitely provided by the software, any type of software, C language, Java, whatever you are using language. And reserve words. Reserve words are the words which have special purpose in computer programs, and computer language know about its functions, right? You don't know, you don't need to tell about the functions in the program. Then you must know about header files. Header file are used at the top of the program, right? And header files, we are using functions of the header files in the program. Then variable and constant. Constant are the quantities whose values do not change during the execution of the program. Numeric constant, character constant, string constant. And variables are the values which are used, which are changed by the user during the execution of the program. वेरिएबल में हम इसकी वैल्यूज़ देते हैं, जैसे ए और बी को हमने वैल्यूज़ दी और हर दफ़ा हम उसको डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ एग्जीक्यूट करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स के जब हम उसको रन करते हैं तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ उसको दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने प्रोग्राम में कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, जैसे ए को 10, बी को 20 वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ही दी हुई है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. हम उसको 10 टाइम्स भी रन करें तो वो वही वैल्यूज़, उन्हीं वैल्यूज़ के साथ एग्जीक्यूट करेगा और वही हमें आउटपुट मिलेगी. क्लियर? देन डेटा टाइप्स used in the C program. Data types are integer, long integer, unsigned, float, double float, long double float. These are variables which are used in the program. And character data type. Character में आप character देते हैं, जैसे कोई भी आप name लिख लें, right? Which are used in the character type, not in numbers. Now we are going to study about, discuss about the chapter number 3, which is input and output handling. In this chapter we will study about output functions.
which is printf function. Most common output function is printf function. Clear? And then input function. Input function is which is scanf, which is common, sorry, which is common input function, and it is used to get values into the variable from the keyboard. Clear? After that, statement terminator and format specifier, we will discuss about that topics. At the end, we will discuss about escape sequence. That's all. These are, I think, 4 topics we will discuss in this lecture. So students, in chapter number 3, input and output handling, our first topic is output functions. Output function, first think about output. Output is the value which is display on the screen, display information on the screen, or print on the printer, right? C language provides different functions to output information on the computer screen. Most common output function is printf function. The syntax of printf function is printf control string, list of arguments, and at the end semicolon, right? This is the syntax of the printf function. Now control string. Control string consists of text, format specifiers, escape sequence. It is written in the double quotes, right? It is written in the double quotes. Text specifier, the message that is to be printed along with the values. For example, look here, this is the program. Chapter number 3, first program. First of all, header files hash include stdio.h, conio.h, wide main function, ये फंक्शन यूज हो रहा है. अब देखिए printf फंक्शन, ये इसमें क्या यूज हो रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में आप कुछ भी प्रिंट करें वो एज इट इज प्रिंट होगा. इसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जो स्टेटमेंट है ये यूज हो रहा है फॉर्मेट स्पेसिफायर. %d, राइट, ये इस स्टेटमेंट के साथ यूज हो रहा है. द सम इज %d. और प्रिंट एफ में आप कुछ भी इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी आप डेटा प्रिंट करना चाहते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है. To understand the printf function, you must know about this. Focus on this statement. Printf, the sum is %d. %d ये जो हमने बताया था कि आप फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ के साथ जो हमने प्रिंट करनी है. %d की जगह पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, c, राइट. c में क्या है, सम है, c इज इक्वल टू a प्लस b. पहले मैं आपको ये प्रोग्राम एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. printf एज इट इज़ प्रिंट होगा. इंटीजर, इस प्रोग्राम में हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं ABC. A एंड B इनपुट हम लेंगे और C में सम हम कैलकुलेट करके उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे. printf एंटर द फर्स्ट नंबर, ये एज इट इज स्टेटमेंट प्रिंट होगी. scanf %d एंड A, ये आप इसका जो सेंटेक्स है वो 1 मिनट में आपको इन scanf का सेंटेक्स बता देती हूँ. Yes, students, scanf function is used to get value into the variable from the keyboard during the execution of the program, right? Syntax of scanf function is scanf, format specifier and list of variables. Clear? List of variables consist of list of variables separated by commas, and format specifier को भी आप comma से separate कर सकते हैं if you are using more than 2 variables. Clear? Now look at the program. Scanf %d, which is control string, and %a, which is
argument, right? You are using variables on list of arguments. printf एज इट इज़ ये स्टार्स प्रिंट होंगे, ये जस्ट आपने आउटपुट को शो करने के लिए किए. printf enter the second number, scanf percentage d and b c is equal to a plus b. a और b में जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी. printf एज इट इज़ printf the sum is percentage d. printf के फंक्शन में आप देख लें ये क्या यूज़ हो रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड दिस इज सी में जो वैल्यू होगी वो इसकी जगह पे प्रिंट हो जाएगी. परसेंटेज डी की जगह पे सी की वैल्यू प्रिंट होगी. क्लियर? गेट सी एच. नाउ कंपाइल इट. नो एरर. रन. स्टूडेंट्स यू कैन सी द आउटपुट. स्टार्स एज इट इज़ प्रिंट हुए हैं. आप अभी इसकी आउटपुट आपको अभी इसी तरह से देखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको स्केप सीक्वेंस का इसी में आउटपुट में बताना है. फिर उससे हम उसको नेक्स्ट लाइन पे एंटर कर देंगे. एंटर द फर्स्ट नंबर 45 हमने एंटर किया. सेकंड नंबर 67. द सम इज़ परसेंटेज डी की जगह पे उसका जो कैलकुलेशन जो प्रोसेसिंग हुई थी सम कैलकुलेट हुआ था वो प्रिंट हो गया. क्लियर? एक बार फिर आप प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ का फंक्शन देख लें. प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट वैल्यू, इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने लिखना है और स्मॉल ब्रैकेट आपने लगानी है एंड पे सेमी कॉलन. स्कैन एफ परसेंटेज डी, जो भी वेरिएबल जितने भी आप यूज़ करेंगे आपने उनको इसी तरह से एंटर करना है और वेरिएबल्स को आप यहाँ पे लिखेंगे. यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, कॉमा के बाद वेरिएबल्स, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स. क्लियर? नाउ स्टेटमेंट टर्मिनेटर. स्टेटमेंट टर्मिनेटर मीन्स टर्मिनेट मीन्स एंड. स्टेटमेंट किससे एंड होती है ये आप लोग प्रोग्राम को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, सेमी कॉलन से. लुक एट द प्रोग्राम. एवरी स्टेटमेंट इज एंड विद द सेमी कॉलन whatever the statement is. printf, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को किया है कि कौन कौन से वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे. ए बी सी 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज किया है. उसके बाद printf फंक्शन, every statement is end with the semicolon. You must remember that thing. Clear? अदरवाइज कंपाइलर आपको एरर दे देगा और आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है. एग्जाम्पल्स भी आप देख लें प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन की. द सम इज परसेंटेज डी और उसकी जगह पे हमने सम यूज़ किया था. जो भी वेरिएबल आप प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, सी हमने यूज़ किया था तो आप सी यहाँ पे यूज़ करेंगे. राइट? जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं वही आपने लिखना है. अगर आप सी की जगह पे आपने सम लिखा है तो यहाँ पे सम लिखेंगे. क्लियर? स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, 2 वेरिएबल्स हैं तो हमने उसको कॉमा से सेपरेट करना है. एंड ए कॉमा एंड बी. क्लियर? अब जो ये स्कैन एफ की स्टेटमेंट है इसके थ्रू हम एक ही स्टेटमेंट में 2 वैल्यूज़ को लेंगे. इट इज़ यूज्ड टू गेट वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल during the execution of a program of 2 variables a and b. जबकि प्रोग्राम में हमने क्या किया था, एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू ली थी. अभी मैं आपको बता देती हूँ. लुक हियर. scanf percentage d and a फर्स्ट वैल्यू, परसेंटेज d and b सेकेंड वैल्यू. अगर आप इसको एक ही स्टेटमेंट में एंटर करते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज़ फॉर द नंबर्स ए एंड बी हम लिख लेंगे. ठीक है? और यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा यहाँ पे एंड ए कॉमा एंड बी. 2 वेरिएबल्स को हम एक ही स्टेटमेंट में भी वैल्यू दे सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू बिकॉज यू आर द प्रोग्रामर. क्लियर?
नेक्स्ट टू टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस. फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ कंप्यूटर कोड दैट टेल्स अबाउट द डेटा टाइप ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द सॉरी डेटा टाइप. जैसे परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज़ हो रही है. Look here, these are the format specifier: percentage %d, percentage %i, id, percentage %f for floating point, percentage %e floating point, exponential notation, single character, percentage %c. And student, this is the same program which we have discussed on the computer. Our last topic is escape sequence. Escape sequence, the special characters used in the C language to control printing on the output device are called escape sequence. These characters are not printed. These are not printed. Thus, just function, just like space, tab functions, right? Line हमने एक space line की देनी है, उसके लिए functions use होते हैं. Escape sequence are /A produces alert bell sound, /B moves cursor backward by one position, /N moves cursor to beginning to the next line के लिए यूज होता है /T टैब, जो हम टैब की स्पेस देते हैं 8 कैरेक्टर्स की स्पेस के लिए. जो /R है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन के लिए यूज होता है. इसी तरह से जो 2 स्लैशेस यूज हो रही हैं प्रोड्यूसेस अ बैकस्लैश. क्लियर. And next single quote produce, and the other one is used for double quote. Clear. Students, look at the output which is without escape sequence. Now we are using escape sequence like next line, tab. Clear. वो हम अभी प्रोग्राम में यूज करेंगे. Then you can see output in difference of both outputs. We are using /n on this statement. Student, look at the program now using escape sequence. यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसमें एंटर होंगी थ्री लाइन्स /n एंड 3 टैब्स का डिफरेंस होगा. जो आप टैब्स एंटर करते हैं ना, 3 टाइम्स आप टैब एंटर करेंगे उतनी स्पेस इसमें आएगी. नेक्स्ट जो आउटपुट है वो प्रिंट होगी 2 लाइन्स के बाद एंड 3 टैब्स उसमें स्पेस होगी. उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्स हैं वो प्रिंट होंगे 3 लाइन्स के बाद एंड 3 इसमें टैब्स की स्पेस होगी. उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, ये प्रिंट होगा 2 लाइन्स के बाद एंड 3 टैब्स की स्पेस होगी. Printf 3 लाइन्स की स्पेस 3 टैब्स. लास्ट आउटपुट आपके पास, सॉरी स्लैश हमने इसमें नहीं एंटर किया हुआ, स्लैश ये लास्ट जो आउटपुट है 3 लाइन्स की स्पेस आएगी और 3 टैब्स. क्लियर. अभी हम इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं. नो एरर, रन. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, राइट. स्टार्स पहले प्रिंट हुए, उसके बाद फर्स्ट एंटर फर्स्ट नंबर, वी आर एंटरिंग फर्स्ट नंबर, देन stars second number, then output. Clear. आउटपुट में हमें टैब्स की स्पेस देनी चाहिए, वो हम अभी क्लियर कर देते हैं. So student, you have seen the output and difference of both outputs using escape sequence and without escape sequence. Clear. Hope you understand the lecture. Thank you and have a nice day. And I will
upload next lecture very soon. Thank you.